Hello students, welcome to the YouTube channel of Welkin National School, Vasai East. This is Mrs. Deepa Mallakanti, the subject teacher of Maths. Today we are going to learn chapter number 9, Direct Proportion and Inverse Proportion from Standard 7. See children, direct proportion. When the value of one quantity increase with an increase in the proportion. Otherwise, the value of one quantity will decrease with the decrease in the proportion. Okay. So, this is been called as an direct proportion. So, here we can observe the equal ratios be given. The equal ratios we will get for the given numbers. Example, the cost of the notebooks are given here and the cost of the number of notebooks are given here and the cost of the notebooks are given here. Example, the 4 notebooks will gonna cost 20 and the 7 notebooks will gonna cost 35. 10 notebooks will gonna cost 50 and 12 notebooks will gonna cost 60. Okay. So when I cancel them together, just like 4 ones are 4, 4 5s are 20. Okay. So 4 ones are 4, 4 5s are 20. So here I've got the ratio is of these notebooks to the cost, that is 1:5. Now move forward for the next one, that is 7 ones are 7, 7 5s are 25. Here also the ratio is came the same like the first term. Now move forward for the next one, 10 ones are 10, 10 5s are 50. 12 ones are 12, 12 6 are 12 5s are 60. So here in each and every numbers, in each and every transaction we are getting the ratio that is 1/5. Okay, so here the cost of the notebooks is increasing with the increasing value of the notebooks. Okay, यहाँ पे जितना जितना notebooks increase हो रहा है उसी के accordingly उसी ratio में यहाँ का cost of the notebooks भी increase हो रहा है. So this example is called as direct proportion. Now let us learn about the inverse proportion. When the value of one quantity increase, the value of the another quantity will decrease. Okay, यहाँ पे क्या होती है कि एक चीज़ बढ़ेगा वैल्यू तो दूसरा चीज़ का रेड्यूस होएगा. अगर एक चीज़ का रेड्यूस होएगा तो दूसरा चीज़ का बढ़ेगा. Okay, now let me tell you the example of this, that अगर गोल्ड का रेट इंक्रीज हो रहा है, इफ द गोल्ड रेट इज इंक्रीजिंग द डिमांड विल फॉल. ओके, खरीदने वाले कम हो जाएंगे. ओके, एंड इन द सेम वे इफ द गोल्ड रेट विल फॉल द परचेजिंग पीपल विल इंक्रीज, दैट इज द डिमांड विल मूव अप. अंडरस्टूड? दिस इज द इनवर्स proportion. You can see over here that number of workers are 4 and the days required to complete the work, that is 60. Okay, so 4 ones are 4. Here you can observe that 4/60 it comes to 4 ones are 4, 4 ones are 4, so 2 will gonna be remain here. 2 plus 2 and 0 will come to 20. So 4 ones are 4, 4 5s are. So the ratio for this is 1:15. And if you see about this, the second one, that 6 वर्कर जब मिल जाएंगे तो वो लोग 40 दिन में वो वर्क कंप्लीट करेंगे. अगर हम लोग इसका रेशियो निकालने जाएंगे तो इट कम्स टू 1:3.10. ओके, अगर लास्ट वाला देखेंगे दैट इट कम्स टू 1:2.4. लास्ट उसके बाद वाला देखेंगे इट कम्स टू 0.1:1. ओके, यू कैन सी हियर यहाँ पे हर एक जगह पे हम लोग को रेशियो डिफरेंट मिला है. ओके, सो व्हेन वी विल गेट दिस, दैट सी when the value of one quantity increase and the value of the another related quantity will decrease proportionately, and when the value of the first quantity will decrease and the value of the related quantity will increase proportionately, and if the product of these two related quantities remain constant, अगर इन दोनों का product multiplication same रहेगा,
देन देर इज अ रिलेशन ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन, इनका रिलेशन होता है इनवर्स प्रपोर्शन. नाउ लेट्स सी दिस का प्रोडक्ट देखते हैं. दैट 4 into 60 which equals to 240. 6 multiplied by 40 which again come to 240. 10 multiplied by 24 which again come to 240. 15 multiplied by 16 which again come to 240. So यहाँ पे common क्या मिलेगा? Here we will get the ratio proportionate. Here we will get the multiplication proportionate. Understood? So this we call as inverse proportion. Now let us understand about this sum. If the 7 kg of onions cost 140 rupees, how much will be we have to pay for the 12 kg of onion? Okay, let the cost of 12 kg onion be x. हम लोग 12 kg onions का फाइंड आउट करना है, सो हम लोग उसकी कॉस्ट x ले लेंगे. सो द वेट ऑफ द ऑनियन इट्स कॉस्ट इन द डायरेक्ट प्रपोर्शन. अगर 7 kg के लिए 140 रुपीज से 12 के लिए कितना होगा? बिकॉज ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इसीलिए हम लोग ने मिडिल में इक्वल डाला है. सो वी विल गो फॉर द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ओके, दिस विल कम टू 7x विच इक्वल्स टू 140 मल्टीप्लाइड बाय 12. ओके, एंड आफ्टरवर्ड्स दिस 7 विल कम डाउन. ओके, सो otherwise what we will do, divide the 7 on both the sides. Okay, this 7 will get cancelled. So what is left here? 7 ones are 7 twos are, that comes to 20. 20 multiplied by 12 which equals to 240. So we have to pay 240 for 12 kgs of onions. Now let us start with the practice set 37. Question number 4. Here they have given the cost of 12 quintals of the soya bean is 36,000 rupees. How much will be 8 quintals? See here the cost will increase with the quintals. Yes, no? So it means it is a direct proportion. Okay. So we can write here the cost will increase with an increase in number of quintals. Therefore, this is what? This is direct proportion. So we will draw one of the thing, that is here we will write the cost and here we will write the quantity. Okay, so the cost is how much? The cost is 36,000 for 12 quintals. So we need to find out 8 quintals के लिए कितना आएगा. Let it be x. Okay, therefore the cost for 8 quintals be x. ओके, 8 क्विंटल्स के लिए हम लोग x ले रहे हैं. नाउ वी विल राइट आवर इक्वेशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 36,000 divided by 12 which equals to x divided by 8. Correct, no? Now what we will do, we will go for the cross multiply. So when I go for the cross multiply, it will come to 36,000 multiplied by 8 upon 12 equals to x. I have did it with some little. Okay, थोड़ा सा ट्रिक मार के की है. So 12 ones are 12, 12 threes are 36. This 3 will come here. Therefore x equals to 8 multiplied by 3000. The thing it comes to 24,000 we require for 8 quintals. Okay, 8 क्विंटल्स के लिए हम लोगों का कॉस्ट कितना लगा है? 24,000.
Let's see this question. Question number 5. Two mobiles cost 16,000 rupees and how much money required for 13 such mobiles? So for finding out cost of one mobile, what we will do that 16 mobiles के लिए two mobiles के लिए 16,000 हुआ है, that 16,000 divided by 2 which comes to what? 8,000. Okay, so the cost of one mobile equals to 8,000. Understood? So therefore the cost of 13 mobiles equals to 13 multiplied by 8,000, which equals to 8 ones are 8, 8 threes are 24, 8 ones are 8 plus 2 which comes to this much 104, and rest of all 3 zeros put is down. So the cost of 13 mobiles will be 1,04,000 rupees. Okay. See children, this is the question number 5 from the workbook. If 12 laborers take 70 days to complete one work, अगर 12 लोग 70 दिन लेते हैं एक वर्क कंप्लीट करने के लिए, how many days 21 workers will take to complete the same work? Okay, now can you please tell me, जो 4 लोगों का काम इस फटाफट हो जाता, 4 लोग मिलके एक काम करेंगे तो फास्ट होता है कि एक मिलके एक काम करेंगे तो फास्ट होता है? Just think about it. Yes, when there is a unity, the work will gonna be effective and efficiency. Correct, no? So here increase in laborers is reverse proportion with the days. Correct ना? यहाँ पे जितना laborers increase होएंगे उतना number of days कम होएगा काम करने के लिए. Okay, so here we can see number of workers will increase and days are getting decreasing. Correct, no? Days are getting decreasing. Therefore, this is an inverse proportion. सो इनवर्स प्रोपोर्शन में हम लोग क्या करते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन में हम लोग ये देखते हैं कि उसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है. सो द प्रोडक्ट ऑफ वर्क विच इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 70. ओके, वर्क कितना हुआ है, या फिर हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं एफिशिएंसी, काम कितना कंप्लीट हुआ है. ओके, सो यहाँ पे हम लोग को ये पता चलेगा कि इसका एफिशिएंसी क्या है, प्रोडक्ट कितना है, वर्कर्स का एंड इसका. सो वी विल कम टू नो दिस कम्स टू 840. करेक्ट ना? मतलब 12 लोग मिलके 70 दिनों में 840 यूनिट वाला एक काम को कंप्लीट कर रहा है, और यही काम को 21 वर्कर्स कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे. ओके, सो व्हाट वी विल डू, द वर्क completed by 21 workers equals to 840 का हम लोगों को ये वर्क कंप्लीट करना है 21 वर्कर्स के साथ, और यहाँ पे हम लोगों का डेज कितना है मालूम नहीं है. सो लेट टेक इट एज x. देयरफॉर x इक्वल्स टू, दिस विल बिकम द डिनोमिनेटर ऑफ इट. ओके, so 840 upon 21, it comes to 21 ones are 21, 21 fours are 84. Okay, which comes to 40 days. Therefore 21 workers complete the work within 40 days. Okay, सो यहाँ पे हम लोग को पता चला ना कि 12 लोग मिलके 70 दिनों में एक काम कंप्लीट कर रहे हैं. दैट 12 laborers are completing the work in 70 days. The same work to be completed by the 21 workers in the 40 days.
Here, this is question number 7 from the workbook. Listen, the stock of the grain in a government warehouse. एक गवर्नमेंट का वेयरहाउस है. वेयरहाउस का मतलब कुछ दूसरा नहीं होता है, गोडाउन. ओके, गवर्नमेंट के गोडाउन में कुछ स्टॉक है ग्रेन्स का, जो है ना 30 दिन तक होएगा 4,000 लोगों के लिए. ओके, इफ द स्टॉक विच हैव केप्ट इन द गवर्नमेंट वेयर हाउस, नो, it will gonna be last for 30 days if we distribute them among the 4,000 people. Now we need to find out that how many days will it last for the 6,000 people. Okay, so here the days are inverse with the people. Yes, no? Here the days are inverse with people. एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव. इसके लिए एक एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ. अगर मम्मी के पास 10 चॉकलेट्स हैं, इफ़ योर ममा इज़ हैविंग अ 10 चॉकलेट्स, इफ़ शी विल डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द 2 चिल्ड्रन, शी विल गिव 5 days दैट चॉकलेट्स टू द ईच ऑफ देम. करेक्ट, नो? अगर वो हर एक दिन में 2 चॉकलेट्स देगी बच्चे को, तो वो कितना दिन तक देगी बच्चों को? 5 दिन तक देगी. अगर 5 चिल्ड्रन हैं एंड 10 चॉकलेट्स ही हैं, सो शी विल डिस्ट्रीब्यूट फॉर हाउ मेनी डेज? शी विल डिस्ट्रीब्यूट फॉर 2 days ओनली. दैट मीन्स इफ द डेज आर इंक्रीजिंग, द पीपल रेशियो विल डिक्रीज. यस ना, नंबर ऑफ पीपल विल डिक्रीज. एंड इन द वाइस वर्सा, अगर डेज कम होंगे तो ज़्यादा लोगों को हम लोग बांट सकते हैं. अंडरस्टूड? नाउ लेट अस स्टार्ट विथ, नाउ वी नीड टू फाइंड द ग्रेन्स कैपेसिटी और द गोडाउन कैपेसिटी. which equals to 30 multiplied by 4,000. That means total 1,20,000 यूनिट्स है. करेक्ट ना? सो ये 1,20,000 यूनिट्स को 6,000 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके, इफ 1,20,000 यूनिट्स is to be distributed among 6,000 people. So it means that 1,20,000 divided by 6,000. 0, 0, 0, 0, 0, 0 will get cancelled. 6 ones are 6, 6 twos are 12, and this 0 comes up here. Okay, therefore number of days is 20. Okay, if we distribute the same quantity of grains among 6,000 people. Okay, now let us start with the practice set 39. Here the Suresh and Ramesh together invested 1,44,000 okay rupees in the ratio of 4:5. So सुरेश और रमेश मिलके 1,44,000 उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है. इन वॉट? टू ब्रॉट अ प्लॉट ऑफ द लैंड. एक लैंड के ऊपर इन्वेस्ट किया है, लैंड खरीदे हैं. आफ्टर सम ईयर्स दे सोल्ड इट एट द प्रॉफिट ऑफ 20%. ओके, कुछ सालों के बाद में उन लोग ने इसको सोल्ड किया है 20% प्रॉफिट पे. सो व्हाट इज द प्रॉफिट ईच ऑफ देम गॉट? सो स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. लेट द कॉमन इन्वेस्टमेंट विल बी B X. Okay, so
रमेश और सुरेश दोनों का इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या है? रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4:5 they have given, that is 4x and 5x. Correct na? Now according to the condition ओके यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे दैट 4x रमेश का है और 5x सुरेश का है. सो दोनों का मिला के 1,44,000 हुआ है. ओके, सो व्हेन आई ऐड देम टुगेदर आई विल कम टू नो 9x which equals to 144,000. So x equals to 144,000 upon 9. When I cancel this, I will get 16,000. So therefore the common investment is 16,000. Okay, that is x equals to 16,000. अभी यहाँ पे मैं जानना चाहती हूँ कि रमेश का इन्वेस्टमेंट कितना है. The investment of Ramesh is 4x which equals to 4 multiplied by 16,000. 4 multiplied by 16,000 which comes to 64,000. Okay, so इसके ऊपर 20% profit. Therefore profit at the rate of 20% on it which equals to 64,000 multiplied by 20 upon 100. 0 0 0 will get cancelled. The answer will come to 13,800. Okay, this is the amount of profit should be received by the Suresh. Now let us understand about the investment of, this is Suresh and here we will find about the Ramesh is 5x which equals to 5 multiplied by 16,000 which comes to how much? Which comes to 80,000. ओके, अभी ये 80,000 के ऊपर इसको 20% प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. सो प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20% विच इक्वल्स टू 80,000 multiplied by 20 upon 100. 0 0 0 0 will get cancelled. 8 2s are 16 and 3 zeros will comes as it is 16,000. Okay, this is the profit received by the Ramesh. I hope that you people have understood this sum. Now children, start with the second question, that Virat and Samrat together invested 50,000 and 1,20,000 rupees to start the business. Okay, विराट और सम्राट दोनों ने है ना, विराट ने 50,000 लेके आया है और सम्राट ने बिजनेस के अंदर 1,20,000 की लेके आया है कैपिटल के तौर पे. सो इन दोनों ने मिलके ये पैसों से बिजनेस स्टार्ट किया है. व्हेन दे हैव स्टार्टेड द बिजनेस दे हैव सफर्ड द 20% लॉस. इन लोगों को 20% लॉस हुआ है. सो हाउ मच लॉस दे इनकर्ड. Okay, so what we will do now, Virat investment is what? The Virat investment is 50,000. Okay, obviously he will get the profit and loss on the basis of his investment only. Now loss on 50,000 which equals to 50,000 comes what? That is 50,000 multiplied by 20% upon 100. 0 0 0 0 will get cancelled. That he has to incur the 1,000 rupees as loss. Okay. Now next one is, it comes to Samrat. Okay, that Samrat invested how much? Samrat has invested 1,20,000. सो इसका लॉस किसके ऊपर हम लोग कैलकुलेट करेंगे?
The loss is to be calculated on investment. Okay. So therefore loss equals to investment amount multiplied by percentage of loss. That is 200 will get cancelled. 12 to the 24. It comes to 24,000. Okay. He has to bear the 24,000 loss, and here that Virat has to suffer the 10,000 loss and Samrat has to suffer the 24,000 loss. Can you see in the question number 5, Jaya, Seema and Nikhil and Nilesh, 4 of the partners as all together invested 3,60,000 rupees to form a partnership firm. ओके सो इन लोग ने पार्टनरशिप का एक बिजनेस खोलने के लिए टोटल चारों लोग मिला के 3,60,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है एंड विथ देयर इन्वेस्टमेंट विल बी प्रोपोर्शनेट टू 3:4:7:6. ओके व्हाट वाज द जयास एक्चुअल शेयर इन द कैपिटल. सो यहाँ पे जया का एक्चुअल शेयर कितना है वो फाइंड आउट करना है. साथ ही साथ में दे मेड द प्रॉफिट ऑफ 12%. In that business, they have made the 12% profit. How much profit did Nikhil make? Okay, here we will find the all ratios and all the investments of the all people. Now let us start. Let the common multiple be x. Okay, therefore ratio will be, that is 3x, 4x, 7x, 6x. Correct? So investment, total investment is what? Total investment equals to, that is total investment they have invested 3,60,000. Correct? No? That 3,60,000 they have invested altogether. When we add them up, 3x plus 4x plus 7x plus 6x. So when we add them up all together, it will come to 20x. Correct? No? So 3,60,000 equals to 20x. Therefore, for finding out the x, which comes to 3,60,000 upon 20, 0 will get cancelled. 1s are and okay. So it comes to 1 second. 2 1s are 2 and it comes to 18. Okay. So the investment of the common multiple will be 18,000. Therefore, x equals to 18,000. Now let us find out the investment and the profit of each of its partners. Okay, that is, let's first start with the Jaya. The Jaya's investment is 3x. That is 3x. That is 18,000 multiplied by 3, which equals to 6,000. Okay, that which equals to 54,000. It comes to 54,000. So जया ने कितना मनी इंट्रोड्यूस की है? 54,000 मनी इंट्रोड्यूस की है और ये 54,000 के ऊपर प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है 12%. दैट इज 54,000 multiplied by 12 upon 100. 0 will get cancelled. When we multiplied it, will come to 6,480 rupees. Okay, which comes to 6,480 rupees. Now let us start for the understand the Seema. Seema investment is what? The Seema's investment is 4x, which equals to 4 multiplied by 18,000. It is exactly how much? It is 72,000. So Seema ने 72,000 बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट की है. नाउ अभी इसका प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे हम लोग. प्रॉफिट इक्वल्स टू
12%, करेक्ट नो. सो 72,000 के ऊपर 12% कितना होगा? 72,000 multiplied by 12 upon 100, 0 will get cancelled. 12 multiplied by 72, it comes to 8,640 rupees. Okay. Now let us find about the investment of Nikhil. Nikhil investment, which is 7x. It means 7 multiplied by 18,000. It comes to total 18 sevens are 126 and triple zeros. So he has invested 1,26,000 in the business, and now let us understand about the profit earned by him, which is again 12% per annum. Okay, that is total investment is 1,26,000 multiplied by 12 upon 100, 0 will get cancelled. The amount it is coming up to 15,120 rupees. Okay. Now move forward for the investment of Nilesh. Investment of Nilesh, which equals to 6x, correct no? 6x, which equals to 6 multiplied by 18,000. It means total 18 6 108 000. That Nikhil has invested 1,08,000 in the business. Now let us find out the profit of his. Okay, so profit is again 12% on the investment. That is 1,08,000 multiplied by 12 upon 100. 0 will get cancelled. The answer it comes to 12,960 rupees. Okay, children, I hope that you have understood this sum very well and this chapter very well. Thank you for watching this video.